न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि भारत का प्रमुख सौर अभियान आदित्य L1 अपने निर्धारित गंतव्य पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लिग्रेजियन बिंदु पर 6 जनवरी को पहुंचेगा। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसरो आदित्य L1 को स्थापित करने की अंतिम तैयारियां करेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 गगनयान मिशन की तैयारियों का वर्ष होगा। This year just began and we are going to have many launches, and 2024 is going to be the year of Gaganyaan. As you already know, the TVD1 mission has just been over last year, and this year we ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंटवार्ता में कहा कि इस पर रखे गए पेलोड से आकाशीय स्रोतों से निकलने वाली मध्यम एक्सरे ऊर्जा किरणों में ध्रुवीकरण की डिग्री और कोण मापने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और अन्य पिंडों का अध्ययन भी किया जा सकेगा। The science mission, उसका नाम है XPOSAT, XPOSAT. So the XPO is basically X-ray polarimetry के बारे में जानबूझ करने के लिए है। This instrument got one which can take images, it takes pictures and also spectroscopy. ये मिशन X-ray के बारे में emission from black holes, neutron stars जैसे objects के बारे में पढ़ने के लिए है। This instrument will look at these objects in a very different way, that is through polarimetry. ये साक्षात्कार आकाशवाणी के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज रात 9:15 बजे से आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। आप इसे हिंदी और अंग्रेजी में हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये 2024 की बहुत अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ये भारत की शक्ति को बढ़ाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीलॉ हमें सही राह दिखाती। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने गैंगस्टर गोल्डी बरार को गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के अंतर्गत आतंकवादी घोषित कर दिया है। गोल्डी फिलहाल कनाडा के ब्रैम्पटन में रह रहा है। वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से संबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि गोल्डी अनेक हत्याओं में शामिल रहा है। पंजाब में शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था में बाधा डालने के लिए तोड़फोड़, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां और आतंकी कार्रवाइयों को भी उसने अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से तमिलनाडु और लक्षद्वीप 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी कल तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे और वहां भारती दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस तथा जहाजरानी से संबंधित 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हरियाणा सरकार ने नए साल के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इसमें 6 प्रमुख जानलेवा बीमारियों का उपचार किया जाएगा। इनमें हृदय रोग, सेरेब्रल पल्सी, कोमा, इलेक्ट्रिक शॉक, कैंसर और सभी प्रकार की दुर्घटनाओं में उपचार की सुविधा शामिल है। राजस्थान सरकार आज से 450 रुपए की दर से सब्सिडी युक्त घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि सब्सिडी राशि महिला लाभार्थियों के खाते में सीधे भेज दी जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलतापूर्वक जारी है। विभिन्न सरकारी विभाग कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग ले रहे हैं और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी तथा सहायता प्रदान कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों के लोग उत्साह के साथ यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और संकल्प यात्रा पहल के लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश के चोगलमसर, स्टोक, साबू और फ्यांग क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न विभाग लोगों को कार्यक्रम स्थल पर ही सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस दौरान विभिन्न कल्याणकारी पहलों के अधिकतम उपयोग के लिए जागरूकता और सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्टोक की निवासी ने अपने गांव में इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। विकसित भारत संकल्प यात्रा मेला। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा लेह में हमारे गांव स्टोक पहुंची। इस यात्रा के चलते विभिन्न विभाग जागरूकता फैलाने और लोगों की सहायता के लिए यहां मौजूद हैं। यह बहुत फायदेमंद है और स्थानीय लोग यहां स्थापित विभिन्न शिविरों से सेवाओं का लाभ उठाते हैं। लेह से यांगचिन डोलमा और मुजफ्फर वाणी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नमो ऐप पर जन मन सर्वेक्षण में भाग लें और पिछले 10 वर्षों में हुई प्रगति के बारे में अपने विचार साझा करें। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से कहा कि वे #जनमन सर्वे का इस्तेमाल करते हुए सीधे अपना फीडबैक उन्हें भेजें। चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री कल से शुरू होगी। इनकी बिक्री 11 जनवरी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि बॉन्ड्स जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बॉन्ड्स जमा किया जाता है तो किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। केवल पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले आम चुनाव या राज्य की विधानसभाओं में मतदान का कम से कम 1% वोट हासिल किया था, वे ही चुनावी बॉन्ड्स प्राप्त करने के पात्र होंगे। चालू वित्त वर्ष में 31 दिसंबर 2023 तक रिकॉर्ड 8 करोड़ 18 लाख आयकर रिटर्न ITR दाखिल किए गए। ये पिछले वित्त वर्ष में दाखिल किए गए कुल ITR से 9% अधिक हैं। पिछले 9 महीनों के दौरान वस्तु और सेवा कर GST का कुल संग्रह 12% की मजबूत वृद्धि के साथ 14,97,000 करोड़ रुपए रहा। वर्ष 2022 के दौरान इसी अवधि में कुल संकलन 13,40,000 करोड़ रुपए दर्ज हुआ था। बांग्लादेश में ढाका की एक अदालत ने नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण टेलीकॉम के 3 शीर्ष अधिकारियों को श्रम कानून के उल्लंघन में 6 महीने के कारागार की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 30,000 टका का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 25 दिन का सामान्य कारागार और भुगतना पड़ेगा। जापान ने देश के भूकंप के कई बड़े झटकों के बाद जारी की गई जोरदार सुनामी की चेतावनी वापस ले ली है, परंतु तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से कहा गया है कि वे अभी अपने घरों को न लौटें क्योंकि समुद्र में घातक लहरों के उठने की आशंका है। जापान की मौसम एजेंसी ने इशिकावा में बड़ी सुनामी और होन्शू द्वीप के बाकी पश्चिमी तट के लिए निम्न स्तरीय सुनामी की चेतावनी जारी की थी। जापान में भारतीय दूतावास ने एक आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है और आपातकालीन संपर्क के लिए फोन नंबर, ईमेल ID जारी की है। भूकंप और सुनामी की चेतावनी के बाद भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय दूतावास संबद्ध अधिकारियों के निरंतर संपर्क में है। भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का परस्पर आदान प्रदान किया है। दोनों देशों के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले की रोकथाम के बारे में समझौते के अंतर्गत इस सूची का आदान प्रदान किया गया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी भागों में अगले 2 दिन तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन में घना कोहरा छाए रहने की आशंका व्यक्त की है। देश में नववर्ष 2024 का स्वागत उल्लास के साथ भव्य उत्सव मनाकर किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोगों को नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएं दी हैं।
गुजरात में नववर्ष के पहले दिन सूर्य की पहली किरण के साथ आज 51 ऐतिहासिक स्थलों समेत 108 स्थानों पर सभी आयु वर्ग के लोगों ने एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार कर इतिहास रचा है। प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 2500 से अधिक लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की इस उपलब्धि की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि गुजरात ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ 2024 का स्वागत किया। शतरंज में दोमाराजू मुकेश ने प्रतिष्ठित कैंडिडेट स्पर्धा में अपना स्थान पक्का कर लिया है। ये स्पर्धा 2 अप्रैल से 25 अप्रैल 2024 तक टोरंटो में होगी। कैंडिडेट्स स्पर्धा में जगह बनाने वाले आर प्रज्ञानंदा और विदित गुजराती के बाद दोमाराजू मुकेश तीसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के माध्यम से पेंशन भोगियों का सुविधा संवर्धन विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में सचिव वी श्रीनिवास श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने अंतरिक्ष में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करने के लिए पहली बार एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से तमिलनाडु और लक्षद्वीप की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। सरकार ने गैंगस्टर गोल्डी बरार को आतंकवादी घोषित किया है। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को श्रम कानून के उल्लंघन के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। जापान ने रिक्टर पैमाने पर 7.6 मापे गए शक्तिशाली भूकंप के बाद सर्वोच्च स्तर की सुनामी वापस ले ली है। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 दिन शीतलहर जारी रहेगी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines: ISRO successfully launches maiden X-ray polarimeter satellite to study black holes and neutron stars in space. Prime Minister Narendra Modi to be on a 2-day visit to Tamil Nadu and Lakshadweep from tomorrow. Centre declares gangster Goldy Brar a designated terrorist. Nobel laureate Muhammad Yunus sentenced to 6-month imprisonment in Bangladesh on charges of labour law violation. Japan drops highest level tsunami warning after a powerful earthquake of 7.6 magnitude. And IMD forecasts cold to severe cold conditions over some parts of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and North Rajasthan during the next 2 days. The Indian Space Research Organisation ISRO has successfully launched X-ray polarimeter satellite XPOSat aboard PSLV C-58. The satellite was launched from Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota, Andhra Pradesh at 9:10 this morning. 10 other scientific payloads were also launched along with XPOSat. This mission marks India's first dedicated scientific endeavour to study the polarization of cosmic X-rays from celestial sources. Following the launch of XPOSat, India has become the second country in the world after the United States to send a specialized astronomy observatory to study black holes and neutron stars in the Milky Way. The mission life of the primary payload XPOSat is about 5 years. ISRO Chief S. Somnath informed about successful insertion of XPOSat into a 650-kilometer low Earth orbit as intended.
The PSLV fourth stage will be lowered to a 350 kilometer circular orbit to carry out the 9 payload experiments which are there on board. So as far as this PSLV goes, it has very uniqueness. One is, of course, is the 60th launch. Then this satellite is very unique satellite, complementing the scientific objectives that we have set for various observations of the universe. It goes with AstroSat. It goes with the Aditya L1. So it's a class of satellite which is observing the universe in various frequencies, spectral bands, as well as this satellite, there is something very unique, the polarization measurements of the X-rays, which are coming from distant objects. On the launch of ISRO's X-ray polarimeter satellite, XPOSat Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Annapurni Subramaniam said it is very important for astrophysical research in the country. In an exclusive interview to Akashvani News, she said the primary payload will measure the degree and angle of polarization in medium X-ray energy range emitted from celestial sources. She also said it will study black holes, neutron stars and other objects. This instrument is specifically designed to detect polarization of X-ray coming from objects such as black holes and neutron stars. It will tell you cause of X-ray emission in these objects and also the strength of magnetic field. So it is the deeper probe for understanding the physics and the mechanisms operating the regions around black hole and neutron stars. ISRO Chairman S. Somnath has said that India's premier solar mission Aditya L1 will reach its intended destination, the Lagrange point L1, situated 1.5 million kilometers from Earth on January the 6th. Talking to media persons on the sidelines of the launch of XPOSat in Sriharikota, he said ISRO will soon perform the final maneuver to put Aditya L1 there. Launched on September the 2nd, Aditya L1 marks India's pioneering venture into studying the Sun from a halo orbit at L1. Mr. Somnath said ISRO has about 12 to 14 missions in the pipeline this year. He said 2024 is going to be the year of preparations for Gaganyaan mission. Prime Minister Narendra Modi will be on a 2-day visit to Tamil Nadu and Lakshadweep beginning tomorrow. The Prime Minister will reach Tiruchirappalli tomorrow and attend the 38th convocation ceremony of Bharati University. He will also inaugurate, dedicate to the nation and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 19,850 crore rupees at a public program in Tiruchirappalli tomorrow. On Wednesday, Mr. Modi will reach Kavaratti in Lakshadweep, where he will dedicate to the nation and lay the foundation stone of multiple development projects. Prime Minister Narendra Modi today urged citizens to take Jan Man survey on the Namo app and share their views on the progress achieved by India in the last 10 years. In a social media post, the Prime Minister asked the people to share their feedback directly with him using the hashtag Jan Man survey. The central government today declared gangster Goldie Brar a terrorist under the Unlawful Activities Prevention Act. Goldie, presently residing at Brampton in Canada, is associated with Babbar Khalsa International. The Home Ministry said Goldie was involved in multiple killing and figured in making threatening calls to pro-nationalist leaders demanding ransom and posting claims of killings on different social media platforms. According to the Home Ministry, Goldie has also been involved in smuggling of high-grade arms, ammunition and explosive materials. Goldie and his associates have been conspiring to disrupt peace, communal harmony and law and order in Punjab through nefarious designs including sabotage, raising of terror modules, carrying out targeted killings and other anti-national activities. The sale of electoral bonds will start from tomorrow. It will be sold through 29 authorized branches of SBI till the 11th of this month. The authorized SBI branches include Delhi, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Uttar Pradesh, Odisha, Bihar and West Bengal. The Ministry of Finance in a statement said in the 30th phase of sale of the bonds, SBI has been authorized to issue and encash electoral bonds. The ministry said the bonds will be valid for 15 calendar days from the date of issue and no payment will be made to any payee, political party if the bond is deposited after expiry of the validity period. Railways Minister Ashwini Vaishnav today virtually flagged off the Balurghat-Shialdah Express from Balurghat in West Bengal.
Speaking on the occasion, Mr. Vaishnav said the railways will invest over 50,000 crore rupees for the rail development projects in the state. The minister added that developmental works are underway to upgrade 98 stations in West Bengal. He further added that the Prime Minister always says that the development of the country is possible only when the railways continue to develop. The Haryana government today bestowed a significant gift of a cashless health facility upon government employees and their dependents in the new year. Governor Bandaru Dattatreya inaugurated the cashless health facility under Ayushman Yojana. An official spokesman said the state government had launched the scheme on a pilot basis in November last year, initially covering employees from the fisheries and horticulture departments, and other coverage has been extended to all regular government employees. The Commission for Air Quality Management has revoked Stage 3 of Graded Response Action Plan GRAP in the entire NCR with immediate effect in view of significant improvement in the average air quality. The decision was taken after the Subcommittee for Operationalization of GRAP today reviewed the current air quality scenario in the region. The committee observed that Air Quality Index AQI of Delhi has been progressively improving and has been recorded at 346 this evening, which is about 55 AQI points below the threshold for invoking the GRAP Stage 3 actions, and there is a likelihood of sustaining the improvement in AQI. The Stage 3 of GRAP was invoked on the 22nd of last month in view of the deteriorating air quality. However, all actions under Stage 1 to Stage 2 of GRAP will remain in force. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our Twitter handle at AIR News Alerts. The Viksit Bharat Sankalp Yatra is successfully going on in different areas of the Union Territory of Ladakh. Different government departments actively participate in the events, providing awareness and assistance to the people. People from different areas of Ladakh welcome the Yatra with enthusiasm and thank the government for the VBSY initiative. Recently, such programs were held in Choglamsar, Stoke, Sabu and Phyang areas of the Union Territory. Different departments provide on-the-spot services to the people, fostering awareness and engagement for maximum utilization of different welfare initiatives of the government. Talking to Akashvani, a resident of Stoke expressed happiness for organizing such program in her village. Viksit Bharat Sankalp Yatra Mela in Leh. Today, Viksit Bharat Sankalp Yatra reached our village Stoke in Leh. Due to this yatra, various departments are here to spread awareness and assist people. It is very beneficial and local people avail the services from different camps set up here. Organizing such camps every year would be very beneficial for the public. During these events, beneficiaries share their success stories and motivate other participants to avail benefits from different government initiatives. With Young Chandolma, Muzaffarwani, Akashvani News, Leh, Ladakh. A record 8 crore 18 lakh income tax returns ITRs were filed in the current financial year till yesterday. This is 9% more than the total ITRs filed in the last fiscal. According to Central Board of Direct Taxes, around 7.5 crore ITRs were filed last year during the same period. The Finance Ministry said to encourage taxpayers to file their ITRs and forms early, over 103 crore outreaches were made through targeted email, SMS and other creative campaigns. GST collection has witnessed a robust growth of 12% with a collection of 14.97 lakh crore rupees during the last 9 months. During the same period in 2022, a total of 13.4 lakh crore rupees were collected. According to the Finance Ministry, the average monthly gross GST collection of 1.66 lakh crore rupees was recorded in the first 9 months of this fiscal year. The ministry said the gross GST revenue collected in the last month is 1,64,882 crore rupees. Japan dropped its highest level tsunami alert, issued following a series of major earthquakes today. However, it told residents of coastal areas not to return to their homes as deadly waves could still come. The agency initially issued a major tsunami warning for Ishikawa and lower-level tsunami warnings for the rest of the western coast of the island of Honshu, as well as the northernmost of its main islands, Hokkaido.
The warning was downgraded to a regular tsunami several hours later, meaning the waters could still reach up to 3 meters. Earlier today, tsunami waves over a meter high hit central Japan after a series of powerful earthquakes that damaged homes, closed highways, and prompted authorities to urge people to run to higher ground. A major 7.6 magnitude earthquake struck the Noto region in Ishikawa Prefecture. Indian Embassy in Japan has set up an emergency control room and issued emergency contact numbers and email IDs for Indian citizens following the earthquake and tsunami warnings. The contact numbers are 818039301715 and 818032144722. The email IDs are sscons.tokyo@mea.gov.in. The Ministry of External Affairs said Indian Embassy is in regular contact with concerned authorities. The people have been asked to follow instructions of the local government. In Bangladesh, a Dhaka court has sentenced Nobel laureate Dr. Muhammad Yunus and 3 top officials of Grameen Telecom to 6 months jail in a case of violation of labour law. The court also fined 30,000 Bangladesh taka each and ordered that in case of default, the convicts would have to suffer 25 more days simple imprisonment. Cold to severe cold conditions are likely to continue over some parts of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and North Rajasthan during the next 2 days. The Indian Meteorological Department IMD has forecast dense fog conditions over Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal and Jharkhand. The minimum temperatures will be in the range of 6 to 9 degrees Celsius over most parts of Punjab, Haryana, Chandigarh, Uttar Pradesh and North Rajasthan. IMD has also forecast dense to very dense fog over some parts of northwest and East India during the next 3 days. In men's chess, Domaraju Gukesh has secured his spot at the prestigious Candidates Tournament, which will take place in Toronto in April this year. Gukesh became the 3rd Indian to make it to the Candidates Tournament, joining R. Pragyananda and Vividh Gujarati. This is the first time in history the 3 Indians are playing the candidates. The winner gets the chance to take on China's Ting Liren in the next World Chess Championship. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. ISRO successfully launches maiden X-ray polarimeter satellite to study black holes and neutron stars in space. Prime Minister Narendra Modi to be on 2-day visit to Tamil Nadu and Lakshadweep from tomorrow. Centre declares gangster Goldie Brar a designated terrorist. Nobel laureate Muhammad Yunus sentenced to 6-month imprisonment in Bangladesh on charges of labour law violation. Japan drops highest level tsunami warning after a powerful earthquake of 7.6 magnitude. And IMD forecasts cold to severe cold conditions over some parts of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and North Rajasthan during the next 2 days. That is all in the news at 9.